अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमने बात करनी है कि इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, हाउ इज़ द डिफरेंट फ्रॉम कीमोथेरेपी, what kind of cancers are treated with immunotherapy, what are the side effects, what is the cost, and is it cost effective or not. So immunotherapy has been around for the past like 10 years now, or it is a relatively newer treatment compared to chemotherapy. Chemotherapy, though, we are using it for decades. So कीमोथेरेपी इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो कि आपके नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स दोनों को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स. इम्यूनोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट दैट बेसिकली boosts your immune system or makes your immune system more active against the cancer cells. So immunotherapy is basically making your body work against cancer cells. So it is not affecting the normal cells, so it has less side effects. It is completely different from chemotherapy. जिस तरह जो classical effects of chemotherapy हैं, जिस तरह hair loss और nausea और vomiting, वो immunotherapy नहीं करती. So we can say that safety profile of immunotherapy is far better than chemotherapy. But there are certain side effects जो कि specific होते हैं for immunotherapy. Like it is making your immune system more active, so it can make your body work against your normal cells also. So but these side effects, they are rare. They are seen only in 10% of the patients. और उसके अंदर these side effects can be literally any organ in the body. Like it can make your immune system work against your thyroid, your liver, your lungs, your intestines. So in सारी जगहों पे inflammation हो सकती है, और inflammation can lead to symptoms. But for most of these patients, these are manageable, but they can be serious in very few, less than 1% of the patients. So we do a lot of blood tests before starting immunotherapy. We continuously do blood tests during immunotherapy, so that any patient who has got even the initial signs of abnormal blood tests or initial signs or symptoms, we can detect early and we can treat them accordingly. So but again, for your assurance, I can tell you that these side effects, they are rare and these are seen in very few patients. So normally जो हम routine में treatment दे रहे होते हैं, that is much easier for the patient. So अब हम बात करते हैं कि किन cancers में immunotherapy दी जाती है. So जो main cancers हैं जिनमें immunotherapy दी जाती है, उनमें सबसे पहले तो lung cancer है, इसके अलावा melanoma है, which is a type of skin cancer. इसके अलावा हम इम्यूनोथेरेपी लिवर कैंसर में देते हैं. इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है, ब्लैडर कैंसर में दी जाती है. और इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी कैन बी लिटरली यूज्ड इन एवरी कैंसर डिपेंडिंग ऑन द हेड एंड नेक कैंसर में दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द PD-L1 स्टेटस. यानी कि कुछ हम मार्कर्स टेस्ट करते हैं आपके बायोप्सी सैंपल पे, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो वी कैन लिटरली यूज़ इट एनी टाइप ऑफ कैंसर. So this treatment has become very essential in cancer treatment over the time. अगर मैं कहूँगी कि this treatment is very important for cancer care, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी. Chemotherapy obviously is important, but gradually chemotherapy के uses obviously कम होते जाएंगे because this treatment has side effects. I don't think chemotherapy is going anywhere in the next 10 years, but chemotherapy is combined with immunotherapy for most of the cancers, and for some of the cancers it has replaced chemotherapy actually. So immunotherapy is a newer treatment in cancer care, and this will be the treatment for future. अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट कितना अवेलेबल है. पाकिस्तान में इम्यूनोथेरेपी की सिर्फ एक ड्रग लाइसेंस्ड है. यानी कि अगर मैं टोटल बात करूं तो अराउंड मोर देन 50 ड्रग्स जो होंगी वो इम्यूनोथेरेपी की लाइसेंस्ड होंगी, और जिनमें से सिर्फ पाकिस्तान में एक ड्रग लाइसेंस्ड है, विच इज़ एक्चुअली वेरी अलार्मिंग कि हमारे मुल्क में कैंसर केयर कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है. सो एक ड्रग लाइसेंस्ड है और उसके भी हर साइकिल की कॉस्ट रफली 3 to 4 lakhs है. सो अगर किसी को हम इम्यूनोथेरेपी रिकमेंड कर रहे हैं और वो रिकमेंड कर रहे हैं एवरी 3 weeks फॉर अ ईयर, तो you can imagine how much cost it is. So immunotherapy really puts a huge financial burden on patient's pocket. और दूसरा, क्योंकि लाइसेंस ड्रग एक है, तो वो जो लाइसेंस ड्रग है उसकी बहुत स्पेसिफिक 2-3 इंडिकेशंस हैं, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं. जो बाकी
cancers हैं like cervical cancer, like triple negative breast cancer, उनमें जो drug है it is not available, so we cannot use immunotherapy in these type of cancers. So एक तो cost ज़्यादा है, दूसरा availability is very restricted, और जो हमारे मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, जिस तरह मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग तो लाइसेंस्ड ही नहीं है, but because this is a treatment and this makes so much difference in survival, so much it brings so much improvement in cancer outcomes, so we are bound to use these drugs, and that is either coming through other channels which are not appropriate, और उसमें ये भी होता है कि हम sometimes we are not sure of the efficacy of the drug, so patients are bringing it but we are not sure about the efficacy of the drug, and we are supposed to use it because this makes a difference in patient outcome. In order to improve cancer care, we have to bring more immunotherapies to Pakistan, we have to bring down the cost of immunotherapy, we have to make it available in all cancer centers, because I think the future that I see at the moment is that soon immunotherapy will replace all cancer treatments, and if we are not equipped with these medicines, we won't be able to provide standard and good care to our patients. Thank you very much.